Good morning, students. Today we shall complete the second half of this essay, Introduction, a Conspectus in a House Divided, which is written by Amrit. So we are here on page number 55. So this essay is about the origin as well as the development of Hindi language. So what is the meaning of word Hindi? Different scholars have given their argument regarding the origin and the development of Hindi language, right? Some scholars considered it different from Urdu, and some scholars agreed that Hindi and Urdu are one and the same language. So here Indian linguist Ghatge gives his opinion that a student of literature must understand and study the family of languages very carefully, and he gives his argument that he should carefully study the resemblance between the two languages, the similarities between the two languages, which should not be sudden similarities, but there must be the sound similarities which occur again and again in language. So he says that there must not be only the vocabulary or words which are similar in two languages, but also the whole grammar of two languages must be identical. The similarities among the languages of a common origin are bound to and do become greater and greater as we look into their earlier forms. So similarities इस तरह की होनी चाहिए कि वो जितना हम उनको स्टडी करें वो ज़्यादा लगती जाएं अपने अर्लियर फॉर्म्स के अकॉर्डिंग, while the reverse is the case with those due to a common symbiosis. So this case or this situation may be reversed in the case of those languages which have common symbiosis or common survival, you may say. It should be fair to presume that many eminent Indian and European linguists who hold that Urdu and Hindi are same language do so with the same caution that Ghatge speaks of. So it is fair to presume, to admit that many eminent Indian and European linguists who hold Urdu and Hindi same language do so with the same caution that Ghatge speaks of. So there are many scholars who study Urdu and Hindi in the same manner as Ghatge referred. For example, here is Ehtisam Hussain, noted Urdu scholar and literary critic. So writer gives the argument of Ehtisam Hussain. The truth is that from the standpoint of linguists, it is not correct to say that Hindi and Urdu are two languages. No linguist has expressed that opinion. So Ehtisam Hussain says that the real truth about the language is that linguistics also refers that it is not correct to say that Hindi and Urdu are two languages, कि linguistics लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग भी ये कहना करेक्ट नहीं है कि हिंदी और उर्दू टू लैंग्वेजेस हैं. नो लिंग्विस्ट हैज़ एक्सप्रेस दैट ओपिनियन. किसी भी लिंग्विस्ट ने इस ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं किया है. मीन्स हिंदी और उर्दू जो है अकॉर्डिंग टू एहतिसाम हुसैन ये एक ही लैंग्वेज है. डब्ल्यू येट्स हाउएवर एक्सप्रेसेस एग्जैक्टली दैट ओपिनियन. So same opinion is expressed by this scholar. It must be observed that the Hindustani or Urdu differs essentially from the Hindi or Hindavi. So he says it must be observed, it must be noted that Hindustani or Urdu differs essentially from Hindi or Hindavi. कि जो हिंदुस्तानी और उर्दू भाषा है वो हिंदी और हिंदुई से अलग है. The former derived principally from the Arabic or Persian. क्योंकि जो फॉर्मर लैंग्वेज है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है, वो अरबी और पर्शियन से बनी हुई है. द लेटर फ्रॉम द संस्कृत. क्योंकि और जो दूसरी लैंग्वेज है वो किससे बनी हुई है? संस्कृत वर्ड से. द इन्फ्लेक्शंस ऑफ बोथ बीइंग द सेम एंड द स्ट्रेंज एडमिक्सचर ऑफ दैम दैट फ्रीक्वेंटली ऑब्टेन्स वेयर बोथ आर स्पोकन इन द सेम सिटी. So the inflections, the sound patterns of both languages are same, Hindi and Urdu. The strange admixture of them that frequently obtains where both are spoken in the same city. और ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एक ही सिटी में दोनों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो दोनों के जो वर्ड्स हैं
अरेबिक और संस्कृत जो वर्ड्स हैं वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, हैव लेड टू द erroneous conclusion that they are the same language. सो इस वजह से एक बहुत ही erroneous, एक बहुत ही गलत कंक्लूजन जो है वो ये निकाला गया है कि ये दोनों एक ही लैंग्वेज है, वेयर एज द उर्दू इज़ पिक्यूलियर इन इट्स एप्लीकेशन टू द मुसलमान पॉपुलेशन. सो W.Yeats का कहना है कि ये जो उर्दू लैंग्वेज है ये मुसलमान पॉपुलेशन के द्वारा यूज़ की जाती है इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, वाइल द हिंदू अप्लाइज ओनली टू द हिंदूज इन द अपर प्रोविंसेस. जबकि जो हिंदुई लैंग्वेज है वो सिर्फ हिंदूज़ के ऊपर ही अप्लाई होती है इन द अपर प्रोविंसेस. बट दिस इज़ वेरी मच माइनॉरिटी ओपिनियन. लेकिन इस तरह का ये जो ओपिनियन है ये बहुत ही माइनॉरिटी ओपिनियन है. रामविलास शर्मा, a noted Hindi scholar, says Hindi Urdu are not two separate languages, they are basically one and the same. Their pronouns, verbs and basic vocabulary are the same. There are no two other languages in the world whose pronouns and verbs are 100% the same. Russian and Ukrainian are much akin to each other, but even they are not so closely alike. So Ram Vilas Sharma says कि हिंदी और उर्दू जो है दीज आर नॉट टू सेपरेट लैंग्वेजेस, ये दो अलग अलग लैंग्वेजेस नहीं हैं, ये एक ही हैं, क्योंकि इनके जो प्रोनाउंस हैं, वर्ब्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और जो बेसिक वोकैबुलरी है वो एक जैसी है. और पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी दो लैंग्वेजेस नहीं हैं जिनमें इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है. इवन रशियन एंड यूक्रेनियन आर मच अकिन टू ईच अदर, बट इवन दे आर नॉट सो क्लोजली अलाइक. सो राइटर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है कि जो रशियन और यूक्रेनियन लैंग्वेजेस हैं they are much akin, much alike, you may say similar to each other, एक दूसरे के जैसी ही हैं लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा मिलती जुलती नहीं हैं. Arnold and Forbes, after talking of the intermingling of the language of the Muslim invaders and that of the native Indian inhabitants, go on to say. So Arnold and Forbes, they talk about the intermingling of the languages of Muslim invaders and that of the Indian inhabitants, and they give their comment. There arose two principal dialects of the modern languages of India. इंडिया की मॉडर्न लैंग्वेजेस के दो प्रिंसिपल मेन डायलेक्ट्स हैं, bearing to each other the same relation as two ships, of which the outworks of one may be formed of oak and those of the other of teak, but of which the internal construction, digging size etc. are the same. So इंडिया की मॉडर्न लैंग्वेजेस के दो प्रिंसिपल डायलेक्ट्स हैं. सो उन दोनों का आपस में सेम वही रिलेशन है जैसा कि दो शिप्स का, दो जहाज़ों का आपस में रिलेशन है. विच द आउटवर्क्स ऑफ द वन में बी फॉर्म्ड ऑफ द ओक, जिसमें से एक जहाज़ का जो आउटर वर्क है वो ओक ट्री से बना हो सकता है. दोज ऑफ द अदर ऑफ टीक, और दूसरे का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो टीक ट्री की वुड से बना हो सकता है, बट ऑफ विच द इंटरनल कंस्ट्रक्शन, रिगिंग साइज एक्सेट्रा आर द सेम. लेकिन उनका जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन है और जो उनका शेप एंड साइज़ है वो एक जैसा है. सो ही टॉक्स अबाउट हिंदी एंड उर्दू हेयर. सो ये एक ही लैंग्वेज के दो डायलेक्ट हैं जो क्या है, बाहर से अलग दिख सकते हैं लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा है. Amrit Rai quotes Gopichandra Narang and Abdul Haq, two well-known Urdu scholars, both of whom comment on the shared lexical base of Hindi and Urdu. So अब अमृत राय, गोपीचंद नारंग और अब्दुल हक दो काफ़ी रिनाउंड स्कॉलर्स, उर्दू स्कॉलर्स के कमेंट्स को रेफ़र कर रहा है जिन्होंने हिंदी एंड उर्दू के बारे में कमेंट किया है. Rai also quotes John Beams, who takes a similar position on the proximity of two languages. अमृत राय जॉन बीम्स का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं जिन्होंने सेम अपना कमेंट दिया है दोनों लैंग्वेजेस की प्रॉक्सिमिटी के ऊपर, रिलेशन के ऊपर, क्लोजनेस के ऊपर. Beams point out that among the various dialects of Hindi, a common universal form of speech or dialect used by educated people originated from the Hindi spoken in the neighboring countryside of Delhi. So Beams क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हिंदी के जो वेरियस डायलेक्ट्स हैं, डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं,
अ कॉमन यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ स्पीच और डायलेक्ट यूज्ड बाय एजुकेटेड पीपल। इसका सबसे कॉमन और जो पॉपुलर डायलेक्ट है और जो स्पीच फॉर्म है वो एजुकेटेड पीपल यूज़ कर रहे हैं, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द हिंदी स्पोकन इन द नेबरिंग कंट्री साइड ऑफ दिल्ली। और ये जो डायलेक्ट है ये कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द हिंदी, उस हिंदी से जो कि दिल्ली के नेबरिंग कंट्री साइड में यूज़ की जाती है। दिस पिक्यूलर डायलेक्ट ऑफ हिंदी वॉज अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ अ न्यू फेज ऑफ द लैंग्वेज। सो ये जो पिक्यूलियर, ये जो स्ट्रेंज डायलेक्ट है हिंदी का, इसे अडॉप्ट किया गया है एज द बेसिस ऑफ न्यू फेज ऑफ द लैंग्वेज इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन, अरबिक, टर्किश वर्ड्स फाउंड अ प्लेस। और इस डायलेक्ट में क्या है जिसको एक नया फेज लैंग्वेज का माना गया है, इसमें पर्शियन, अरबिक, टर्किश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। बट बीम्स ऑल्सो प्रिविलेजेस हिंदी बाय रेफरिंग टू उर्दू एज द उर्दू डायलेक्ट ऑफ हिंदी। लेकिन बीम्स जो है हिंदी को प्रिविलेज दे रहा है, इम्पॉर्टेंस दे रहा है बाय रेफरिंग टू उर्दू एज द उर्दू डायलेक्ट ऑफ हिंदी, क्योंकि वो उर्दू को क्या मानता है? हिंदी लैंग्वेज का ही उर्दू डायलेक्ट, एक डिफरेंट लैंग्वेज नहीं मानता है। और द उर्दू फेज ऑफ हिंदी, या तो इसे हिंदी का ही उर्दू फेज मानता है, दौर मानता है। This plethora of quotations will give the reader some idea of the complexity of the problem. So this plethora of quotations, plethora you may say that abundance, or you may say the quantity of something. This plethora of quotations will give the reader some idea of the complexity of the problem. ये जो plethora है, ये जो abundance of quotations है, will give the reader some idea of the complexity of the problem. ये readers को इस problem की जो complexity है, जो डिफ़िकल्टी है, उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आइडिया दे रहा है। इट इज़ इंडीड डिफ़िकल्ट टू कंसीव हाउ टू लैंग्वेजेस सो क्लोजली अकिन हैव ड्रिफ्टेड सो फार अपार्ट इन देयर मॉडर्न स्टैंडर्ड और हाई फॉर्म्स एज टू बिकम इनकम्प्रिहेंसिबल टू ईच अदर। इट इज़ इंडीड डिफ़िकल्ट टू कंसीव, कि ये मान लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि कैसे टू लैंग्वेजेस जो इतनी मिलती जुलती हैं, ये कैसे एक दूसरे से कितनी अलग हो गई अपने मॉडर्न फॉर्म्स में, हाई फॉर्म्स में, टू बिकम इनकम्प्रिहेंसिबल टू ईच अदर, कि एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। व्हेन वॉज इट दैट दे केम टू अडॉप्ट देयर रिजिड एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पोजिशंस, कि ऐसा कब हुआ कि इन्होंने अपने रिजिड और म्यूचुअली डिफरेंट पोजिशंस को, एक्सक्लूसिव पोजिशंस को अडॉप्ट कर लिया। ऑफ अरबो पर्शियन प्यूरिज्म ऑन द वन हैंड, किस तरह की फॉर्म्स थी? एक तरफ अरबो पर्शियन प्यूरिज्म था एंड संस्कृत प्यूरिज्म ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या था? इनका संस्कृत प्यूरिज्म था। इन अदर वर्ड्स, व्हेन डिड हिंदी एंड हिंदवी स्प्लिट और स्टार्ट स्प्लिटिंग? अगर हम बात करें कि ऐसा कब हुआ जब हिंदी और हिंदवी लैंग्वेज जो थी, जो कि एक ही लैंग्वेज थी, कब स्प्लिट हुई और कब स्प्लिट होना शुरू हुई, बटना शुरू हुई? May we understand the split as a natural course of its development governed by the internal dynamics of the growth of a language, or as the result of extraneous divisive forces not really intrinsic to the language and its growth? So writer here says कि क्या हम ऐसा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो लैंग्वेजेस का स्प्लिट है, जो डिफरेंस है, ये कोई नेचुरल कोर्स था इसके डेवलपमेंट का और इसकी यू में सी प्रोग्रेस का, गवर्नड बाय द इंटरनल डायनामिक्स ऑफ ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज, जो कि किसी भी लैंग्वेज की ग्रोथ का इंटरनल प्रोसेस है, और एज द रिजल्ट ऑफ एक्सट्रेनियस डिविजिव फोर्सेस, या ये किसी एक्सट्रेनियस यू में से किसी आउटर डिवाइडिंग फोर्स का रिजल्ट है, नॉट रियली इंट्रेंसिक टू द लैंग्वेज एंड इट्स ग्रोथ, जिसका लैंग्वेज की इंटरनल स्ट्रक्चर से और ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज़ अ हाईली पर्टिनेंट क्वेश्चन बिकॉज इफ़ द आंसर इज़ द फॉर्मर, the inquiry becomes one of the merely academic. This is highly pertinent question, कि ये जो question है, it is a kind of you may say appropriate question, or you may say the suitable question regarding the problem, because if the answer is the former, the inquiry becomes one of mere academic philological interest, कि अगर it is the process of its internal growth, you may say अगर ये इसकी internal growth का प्रोसेस है, इंटरनल डेवलपमेंट का कोर्स है, सो दिस इज़ एन एकेडमिक क्वेश्चन और फिलोलॉजिकल क्वेश्चन। बट इफ़ द लेटर, लेकिन अगर इसका जो डिवीजन है ये पॉलिटिकल फोर्सेस से हुआ है,
then the finding may have some contemporary social import. So इसकी जो findings है, इसके जो conclusions हैं, इनकी कोई social significance हो सकती है, and an understanding of the past may hold some light for us today. और जब तक हम लैंग्वेजेस की पास्ट को स्टडी नहीं कर रहे हैं, जब तक इनके ओरिजिन को, इनकी डेवलपमेंट को स्टडी नहीं कर रहे हैं, we cannot get an exact idea about the languages Hindi and Urdu today. The way linguistic passions are working at the moment, dividing protagonists of Hindi and Urdu into two enemy camps is to say the least alarming. कि जिस तरह से प्रेजेंट कंटेक्स्ट में लैंग्वेज ग्रो कर रही है, लिटरेचर्स ग्रो कर रहे हैं, सो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस के जो प्रोटैगनिस्ट्स हैं उनको भी टू एनिमी कैंप्स में इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है, ट्रबलसम सिचुएशन है. Therefore, the subject struck me both as a student of literature and as a writer of Hindi prose. So, therefore, this subject attracted the writer, being a student of literature as well as the writer of Hindi prose, as one of the exceeding importance. On the one hand, linguistic purism blocks the way to the healthy and natural growth of two languages by denying their essential unity. So सिचुएशन क्या है कि एक तरफ जो लिंग्विस्टिक प्योरिज्म है लैंग्वेजेस का, कि जो उनका प्योर इनके अरबिक पर्शियन वर्ड्स और संस्कृत वर्ड्स के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जा रहा है, ये इनको हेल्दी और नेचुरल ग्रोथ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, जो कि इनकी असेंशियल यूनिटी के लिए ज़रूरी है. ऑन द अदर क्रिएट्स अ डेंजर ऑफ सोशल टेंशन. दूसरी तरफ क्या है, इनका जो सेपरेट ग्रोथ है, पैरेलल ग्रोथ है, ये एक सोशल टेंशन भी क्रिएट कर रहा है. दिस सीम्स टू फर्दर अंडरलाइन द नीड फॉर सच एन इंक्वायरी. कि ये जो सिचुएशन है ये किसी फर्दर इंक्वायरी की तरफ इंडिकेट कर रही है. However, before we embark on substantive linguistic research on this subject, it seems advisable to first look for the extraneous divisive force in the British colonial policy of divide and rule. So writer says, if we want to study this problem or this situation thoroughly, we must understand that the same policy is working in this context like the Britishers' policy of divide and rule. This is particularly necessary because of general feeling among protagonists of both Hindi and Urdu, from their respective angles, that the divisive process started with Fort William College, where Sir John Gilchrist, the veterinary of the Hindi world, set up Urdu in the name of Hindustani against Hindi Bhasha, and took due care that they ran in two parallel mutually exclusive lines. Therefore, the first clue for the probe lies in the direction of Fort William College, in why it was founded and what its language policy was. So writer says कि ये जो डिवीजन का प्रोसेस है ये कहाँ से शुरू हुआ, फ्रॉम कि हिंदी और उर्दू को इनकी टू डिफरेंट एंगल से क्यों देखा गया. दिस प्रोसेस स्टार्टेड इन द फोर्ट विलियम कॉलेजेस, where a renowned scholar like you may see Sir John Gilchrist, the veterinary of Hindi world, veterinary here means the villain of Hindi world, which was not much liked in the Hindi audience, set up Urdu against Hindi. इन्होंने उर्दू लैंग्वेज को हिंदी के अगेंस्ट ही खड़ा कर दिया, एंड टुक ड्यू केयर, और इन्होंने ये भी नज़र में रखा कि कैसे ये दोनों लैंग्वेजेस पैरेलल ग्रोथ करें, डेवलप करें, लेकिन ये मिक्स ना हो पाएँ. सो दिस प्रोसेस स्टार्टेड फ्रॉम द फोर्ट विलियम कॉलेज. सो राइटर सेज इट इज़ स्टिल अ क्वेश्चन व्हाई दिस कॉलेज वाज फाउंडेड एंड what is its language policies. So it means that Amrit Rai does not agree with the division of Hindi language into Hindi and Urdu separate languages. So this is still a question of debate according to the writer and according to the different scholars whose arguments are mentioned in the essay.